1,000 words ain't enough to define a body of, yeah. Caught her look and she wants it back. She's firing up that body up, yeah, babe. You think that I want you, but nah, babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic trace. Don't take it too personally, yeah. My fault, my bad. The words out, but you weren't ready for it. Show off, appearance of I got it, but I got.
देवी और संजनों गुड इवनिंग आप सभी को एंड एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्ले स्टेशन टीसी कम्युनिटी कप में where with me we are going to be your storytellers me and friends we have had an amazing qualifiers time. Now is the time which is most awaited time, which is going to be the time of semi finale. We have the top four players in our whole tournament, and how excited are you to witness all of the action today? ओह फॉर श्योर तरुण, सुपर सुपर एक्साइटेड टू सी, क्योंकि ऑलरेडी मेन इवेंट के कुछ दिन हम लोग देख चुके हैं। पहला दिन मेन इवेंट का इट वाज अमेजिंग, जहां से हमें चार और छठे हुए प्लेयर्स मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब जो सेमीफाइनल के अंदर दौड़ने वाले हैं, अब जो जी जी। सेमीफाइनल के अंदर खेलने वाले हैं टू मेक देयर स्पॉट फॉर द ग्रैंड फिनाले। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्वालिफायर्स 1 से, जहां से 4 प्लेयर्स हमें देखने को मिले थे। एंड लेट्स एग्जैक्टली मूव ऑन टुवर्ड्स द फिक्सचर्स एज वेल, कि किस तरीके से यहाँ पर आज की गेम्स पहले बात करते हैं कि आज के जो गेम्स हमारे वो किस तरीके से जाने वाले। so that is going to be between Aditya Dubey and Karman Tikka, and the second game is going to be between Aman Warsi and Navneet G. So these two games important और interesting रहने वाले हैं, क्योंकि तरुण, we all know that Karman Tikka is going to be the Indian that is going to represent India in Asian Games. So ये game बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। Man, it's the best what India had to, just come up with Karman Tika. I believe this is that one player in which, qualifiers टू में भी उन्होंने अपने साइड से एक बहुत ही बेहतरीन Oh yes, डोमिनेटिव 7-3 का लीग डे हमें दिया था एंड yes. आई थिंक ये लीग मैचेस ही आज भी हमें कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा. देयर आर टू मैचेस, अवे स्टेडियम एंड एट द होम स्टेडियम फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर चूजिंग विद देयर रिस्पेक्टिव पिक्स. But I believe that within these two matches, there's going to be a lot more action going inside. Players will be filled with determination, they will be filled with each and every dedication which they have for the game. And believe me, it's the game of FIFA, so we all are the one who are quite excited. Like it's a anytime play game. FIFA being that one game which is one of those oldest game but most potential game in the esports scenario as well, to be honest. Oh, for sure. And I mean, FIFA एक ऐसा गेम है, नेवर डाई, इट इज अ नेवर डाइंग गेम। इतना True. ज्यादा फन, इतना ज्यादा मजा आता है खेलने के लिए। एंड नाउ गेटिंग दैट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज वेल एज अ स्पोर्ट, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू किक थिंग्स ऑफ क्वाइट अ बिट। एंड लेट्स सी आज के दिन पे किस तरीके से फॉर नाउ इंडियन एथलीट जो है परफॉर्म करते हैं। 4 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ से अब जो 2 प्लेयर्स जीतेंगे, दे विल मीट इन द ग्रैंड फाइनल टुमारो। सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ फिक्चर फॉर यू गाइस टू रिमेंबर। कल के दिन पे आज दोनों के जो विनर्स होंगे वो हमें भिड़ते हुए नजर आ जाएंगे ग्रैंड फाइनल के अंदर। दैट इज समथिंग आई एम स्टिल वेटिंग फॉर, बट स्टिल सेमीफाइनल्स इज येट टू स्टार्ट। क्वालिफायर 1 क्वालिफायर True. 2 से जैसे पहले बता रहे थे, हमने शुरुआत करी थी जहां से हमें चार टॉप फोर फ्रॉम ईच ऑफ द क्वालिफायर्स क्वालिफाइड फॉर द मेन इवेंट। एंड देन इन मेन इवेंट डे नंबर 1 वी हैड दोज 4 गेम्स लाइन इन फ्रंट ऑफ अस। एंड उन 4 गेम्स में से ये 4 एथलीट जो है, ये 4 प्लेयर्स जो है, जो 4 विनर्स है, वो हमें देखने को मिलेंगे अब सेमीफाइनल खेलते हुए। सो तरुण, बोथ ऑफ दीज गेम्स सुपर इंपॉर्टेंट। एक-एक प्लेयर जो जीतेगा वो हमें ग्रैंड फाइनल के अंदर क्वालीफाई करता हुआ नज़र आएगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो आदित्य दुबे एंड करमान टिक्का जी का जी. गेम है, इस पे आँखें या ज़रूर बनी रहेंगी। बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ एक ग्रैंड फिनाले, एक पोटेंशियल ग्रैंड फिनाले जो हम कभी यस, भी अपने साइड से एक्सपेक्ट कर सकते थे, दैट्स नाउ द सेमीफिनाले. Now this is something which I'm really excited about, to see that which one of these players are going to eventually make it up till the grand final. Maybe यस, grand final potentially could be a very easier part once you face this level of opponent, because as you mentioned, we have Arman Dubey, we have none other than Karman Tika. These two of the players, one of them being qualified representing our region, then we यस। have the other one with the experience, which each and every expertise knowledge of what he is, really, I'll say, best at. So I believe कि semi-finale one not less than a grand finale, and I think a grand finale के पहले के just एक I'll say maybe trailer, or maybe some of those teasers to watch out for, because that is going to be something I'm going to be looking forward for, to see that out of both of these semi-finals, which are the players who will make it up in the grand finals, which we will witness tomorrow as well. ओह! फॉर श्योर। एंड चलिए सीधा तरुण गेम के अंदर बढ़ते हैं। गेम के अंदर ये सारी बातें कंटिन्यू करेंगे कि कौन-सा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है। सो गाइस, लेट्स जंप इंटू लेग नंबर 1 ऑफ मैच नंबर 1 दैट इज़ अंडरवे। Well, match begins. 5 minutes already. यहाँ पे continue होते हुए नजर आ रहे in game, and that's a good possession being inside the side, if I'm not wrong, of Karman Tika.
वेल इंटरसेप्ट जरूर हुआ है, थोड़े स्किल्स मूव स्लो, बहुत ही सही समय पे अपने बॉल को कंट्रोल में रखा, एंड दैट्स ऑलमोस्ट अ गुड अग्रेशन व्हिच ही इज शोइंग ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट. लेट्स सी फॉर नाउ टिक्का विद द बॉल अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं अग्रेसिव बॉल्स को एंड जस्ट जस्ट लुक एट दिस नानी के साथ कितनी बेहतरीन तरीके से ही जस्ट ड्रिबलिंग पास डिफेंडर्स ऑल्दो फाइनली डिसाइड्स टू गिव a pass towards his own teammates and एक काफी अच्छा थ्रू बॉल निकाला गया यहाँ पर Zaha with the ball looking for an opportunity to cross in gets it Mkhitaryan का शॉट ब्लॉक किया जाएगा यहाँ पर आदित्य दुबे अर्ली अर्ली गोल कंसीड करने से यहाँ पर कुछ ही सेंटीमीटर से सर्वाइव करते हो और एक लॉन्ग रेंज अटेम्प्ट बट ब्लॉक किया जाएगा एंड दिस टाइम द डिफेंसिव ड्यूटीज फ्रॉम द साइड ऑफ आदित्य दुबे दे आर जस्ट परफेक्ट. Man, what an opportunity he had. Could have been really better, but कॉर्नर किक पे भी अपने साइड से पास देना, ये एक बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगा, टेक्निक हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द साइड ऑफ टीका. बट नॉनदलेस फर्नांडिस के पास अभी बॉल आ चुका है, वो अपने साइड से पास करने का पूरा प्रयास रख रहे हैं. गिव्स अ थ्रू बॉल बट गेट्स डिफेंडेड वेल फ्रॉम द साइड ऑफ नन अदर देन अमान. एंड आई बिलीव कि अब थोड़ा अपने साइड से अपने लाइक प्लेस भी इधर बनाने बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए किस तरीके का प्रेशर करवान टीका यहाँ पे टोटली बना रहे इस गेम में. Oh, for now, Aditya with the ball and काफी इसी तरीके से he just trying to attract as many defenders as possible towards him and ये किस तरीके से करा जाएगा ये जरूर मैं देखना चाहूंगा. मीनवाइल ये काफी अच्छा अटैक बनाया गया है, सीधा डी के अंदर पेनिट्रेट जरूर किया था बट ओवर अग्रेसिव चले गए यहाँ पर बॉल के साथ कंट्रोल में नहीं रख पाए एंड इसी के चलते एक गोल किक जो है वो टिक्का को कंसीड कर दी जाएगी. मीनवाइल टिक्का ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट थ्रू बॉल कमिंग इन थ्रू टू Zaha as well. Zaha looking for an opportunity to get inside the box but deny किया जाएगा. पोजेशन मेंटेन करना ज्यादा बेहतर समझा मिख्तारियन बॉल के साथ. बीच में थ्रू बॉल जरूर निकाली जा सकती है, सैंचो इज प्रेजेंट बट मीनवाइल एक फाउल जो है वो कॉल किया गया है जस्ट एट द एज एंड दिस कैन बी द फर्स्ट पोटेंशियल गोल. ये पहला गोल जरूर होना चाहिए एंड लेट्स सी किस तरीके से क्या शॉट लेना चाहेंगे या फिर एक फेक करके अपने टीममेट को ही पास किया जाएगा. ये एक ऐसी चीज है जो मैं जरूर देखना चाहूंगा एंड टाइम ले रहे हैं अपना टिक्का टिक्का विद अ शॉर्ट पास देन अ शॉट एंड Wow. मार्किंग ऑलमोस्ट कन्वर्टिंग ऑन दैट. कॉर्नर अभी भी है सो खतरा टला नहीं है. जेडन सैंचो विद द बॉल लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी लुकिंग फॉर अ पास इंस्टेड एक लॉन्ग रेंज एम्बिशियस अटेम्प्ट एंड just to say not the best possible shot that he could have given so far. Ball back with Aditya and let's see किस तरीके से अपने लिए सबसे बेहतरीन एक अटैक बना पाते हैं या नहीं. Aditya Dubey, he's in a desperate need to get some aggression off himself. डिफेंस बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाता है, बट ये टैकल बहुत ही ज्यादा दिक्कत एक बार फिर बना सकता है आदित्य दुबे के लिए. करवान टीका विद द बॉल गेट्स टू फर्नांडिस, एक बहुत ही अच्छा वॉली पास हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे. मीनवाइल पासेस हिज वे थ्रू द डी बॉक्स के अंदर टैकल हो जाएगा एंड इसी के रहते यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंटरसेप्शन अपने साइड से निकालेंगे. आदित्य दुबे इज नाउ हैविंग अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बॉल, मेकिंग श्योर दैट ही इज रनिंग डाउन द लाइन थ्रू द विंग्स. बहुत ही एफिशिएंट पास, मैं कहूंगा एक सही समय पे प्लेयर्स को ओपनाइज करने का पूरा यहाँ पे मौका दिया जा रहा है. एक अच्छा थ्रू बॉल या एक लॉन्ग पास को डन द ड्रॉप, बट एक बहुत ही ऑफ एंगल के साइड से हमें यहाँ पे एक शूट का प्रयास देखने को मिला. एंड मैन दैट वाज अ वेल प्लेड गेम राइट देयर फ्रॉम द साइड ऑफ आदित्य. गुड अटेम्प्ट कमिंग इन नियर पोस्ट के ऊपर फिनिश करने की कोशिश करी गई थी ऑल्दो नॉट द बेस्ट पॉसिबल फिनिश बट द अटेम्प्ट वाज प्रीटी गुड एज वेल. बट मीनवाइल टेक्का बीटिंग द मैन हु वाज सपोज्ड टू बी कवरिंग हिम एंड एक पीछे बैक पास जरूर दिया गया है. नाउ ट्राई टू फाइंड दैट स्पेस फॉर हिमसेल्फ बट द टैकल्स आर ग्रेट एंड पोजीशन वापस हासिल करने में थोड़ी देर के लिए सही आदित्य कामयाब जरूर हुए थे बट वंस अगेन टिक्का विद द बॉल. टिक्का ट्राई टू गो फॉर दोस स्किल्स बट थोड़ा सा ओवर कुक कर दिया एंड जिसके चलते एक लॉन्ग बॉल के पास शायद आदित्य दुबे के पास अभी भी पोजीशन है. जी नहीं, टिक्का जस्ट गेनिंग इट राइट बैक. सो इवन इफ वी सी द पोजीशन स्टैट्स कुछ ही देर में आएंगे यहाँ पर हाईलाइट होते हुए नजर आ जाएंगे, उसमें भी शायद हमें टिक्का ही डोमिनेट करते हुए नजर आ जाएंगे. तरुण बहुत सही कहा आपने. देखिए उधर तीन डिफेंडर्स ने किस तरीके से डिफेंड किया. आदित्य ही इज लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग. अ 5-4-2 लाइक दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू रियली एक्सपेक्ट, बट स्टिल दोस डिफेंसेस रियली लुकिंग क्वाइट पावरफुल. एंड ये ही सबसे बेहतरीन चीज है कि आप अपने साइड से अडेप्टेबिलिटी पूरी रख रहे हो. बहुत ही अच्छा अराउंड द बॉल का यहाँ पे प्रयास, बट उसी के साथ यहाँ पे एक बार फिर डिफेंडर्स गोना कम इन. ओ माय गॉड, दिस इज अ रिस्की पोजीशन. ही माइट नॉट वांट टू लूज आउट द पोजीशन, बट आदित्य दुबे फाइनली गेट्स इट आउट ऑफ द डेंजर zone and now it's the ball which he is taking off the half field.
Oh my god, that could have been an offside, but somehow passes this way through, goes for another through Oh, ball, but the goal misses. Oh my god, that was a clean opportunity. But somehow Aditya Dubey, he came so close, yet so far from getting the ball inside the net. And man, now this is a concerning point. A good low pass, but man, the in swing was great. That turns into a goal kick. ओह! कितना बेहतरीन पास, कितने बेहतरीन पासेस निकाले गए थे आदित्य की तरफ से। जस्ट आई गेस जो लास्ट पास दिया वो थोड़ा-सा ओवर कुक कर दिया। इफ ही कुड हैव गॉन विद द फर्स्ट प्लेयर शॉट इट कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट बट नाउ करमान विद द बॉल, करमान Oh ट्राई टू my. कट इट बैक बट उसको अच्छी तरीके से आदित्य ने रीड किया। आदित्य ने एक डिफेंडर ऑलरेडी उस पोजीशन में लगा के रखा हुआ था ना, अब यहाँ पर काउंटर अटैक पे निकलते हुए आदित्य ही वांट्स टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बट करमान विल डिनाई हिम। दैट शिट वापस अपने लिए हासिल करेंगे कर्मांटिक का। Now let's see how does he want to run away with the ball. Again, Jadon Sancho for now dribbling his way past the defenders. एक प्लेयर को चगाने में जरूर कामयाब हुए थे। नानी के साथ एक 1-2-1 का बहुत अच्छा पास, बहुत अच्छे टचेस। बट No, देन that's एक फाउल जो है कमिट किया गया, फाउल कमिट किया गया आदित्य दुबे की तरफ से और एक बार फिर से बहुत खतरनाक एरिया के अंदर ये फ्री किक जो है वो अवॉर्ड करी गई है। लेट्स सी इस बार क्या पूरी तरीके से कुछ करने में कामयाब रहेंगे। जिन्हें एक रोल बॉल दी गई थी और उसी के ऊपर उनको पूरी तरीके से डिपोजेस करा जाएगा। ग्रेट डिफेंडिंग कमिंग इन एंड आदित्य दुबे हैज मैनेज्ड टू कीप द स्कोर लाइन इक्वलाइज इन द वेरी फर्स्ट हाफ। Man, he cleared it as if he did not really wanted to even try a bit to go on that offensive side. Already 2 minutes समाप्त हो चुके थे, हमारा जो हाफ टाइम का विसल ब्लो हुआ था, बट उसके बावजूद क्या ही बेहतरीन, व्हाट एन अमेजिंग पीस ऑफ गेम वी गॉट टू सी। सेमीफिनाले का यहाँ पे जब स्टेज आता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे प्रेशर ऑलरेडी रहते। देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन इनसाइड द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ दीज प्लेयर्स अराउंड देम। Still trying to make sure कि वो अपने आप को यहाँ पे they are able to give their best is something which I really believe that Karman Tika is doing quite well, building on the pressure. There was a single opportunity. If that could have been capitalized, then Aditya would have had that first score for himself. But we start the second half with a 0-all. Well, good start, a promising start coming in. This time the kickoff was from the side of Karman Tika. Aditya Dubey on the other side. Let's see how is he gonna get that possession built up, because this is clearly a 56-44 possession which we are currently seeing. But once again, opportunity being created, बहुत ही अच्छा down the wing. यहाँ पे हमें run करते हुए देखने को मिल जाते हैं। Back off किया instantly, try कर रहे हैं कि अपने साइड से जितना हो सके उतने open कर पाए। He gets that single low pass and he does manage to get it, but the interception and the keeper comes in, and well, that's a great defending coming out from the side of Aditya Dubey as well. आदित्य जिस तरीके से उन्होंने अभी तक अपना डिफेंस बहुत अच्छा रखा है, दैट इज समथिंग आई लव टू सी राइट नाउ। मीनवाइल एक बार फिर से सेम गोज फॉर कर्माटिका एज वेल, नो गोल्स लीड टिल नाउ, द बेस्ट पॉसिबल डिफेंडिंग एंड ही हैज आल्सो बीन अ पर्सन जो बहुत टाइट स्पेसेस को कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं व्हेन ही इज ट्राइंग टू डिफेंड, बिकॉज एग्जैक्टली वहीं से प्लेयर्स जो है वो फ्लड आउट करते हैं, वहीं से प्लेयर्स जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल, अपने मूव्स का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करते हैं। अगेन द सेम थिंग वाज बीइंग ट्राइड ओवर देयर बाय करमान। टर्न करने की कोशिश थी एक बहुत छोटे, एक बहुत ही चीकी स्पॉट से, बट डिनाई किया जाएगा। मीनवाइल एक अच्छी लॉन्ग बॉल निकाली है, एक Oh, बहुत nice. अच्छी लॉन्ग बॉल निकाली गई विंचियस। द पास वाज देयर, ही थॉट जो है उनके अटैकर जो है he will be able to beat the defender somehow, but that was not the case। बॉडी का अच्छा इस्तेमाल किया गया था और उसी के चलते अब एक काउंटर अटैक बनाने की कोशिश करी जा रही है। दिस टाइम इट इज गोना बी Varane who plays it back towards Marquinhos। Now Marquinhos has a lot of space, but instead of passing decides to just fight his way through three defenders and उनको डिपोजेस करा जाएगा, उनसे बॉल छीनी जाएगी एंड नाउ आदित्य दुबे राइट ऑन द अटैक। One thing which you do gotta agree is that Aditya with the defense is someone quite promising. If that's not an offside, then it's a goal. But well, luckily, he somehow manages to get the whistle and get the free kick. Some good piece of gameplay we are getting to see here. Once again, offside trap बहुत बेहतरीन तरीके से play किया जा रहा है. Just look at the 4 defenders and 3 midfielders being so much at a defensive approach. As I mentioned, कि defense from the side of Aditya Dubey, that's at a certain expectation level being already part away. But the side of none other than Karman Tika, I really want to see कि वो अपने side से किस तरीके से यहाँ पे इस defense को beat करना जानते
डालते हैं, पासिंग हिज वे थ्रू, टेकिंग इट ऑफ द मिडफील्ड, ट्राई कर रहे हैं कि अपने साइड से वो अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज ओपन अप कर पाए. वांट टू मेक श्योर दैट ही इज कमिंग अप विद सम थ्रू बॉल और वन ओपनिंग फॉर हिमसेल्फ व्हिच कुड रियली ब्रिंग हिम द लीड. इट्स अ लीग गेम. सेकंड हाफ में ऑलरेडी हम देख सकते हैं 65 मिनट इन गेम यहाँ पे फिलहाल समाप्त होने पे आ चुके हैं. एंड दिस इज वे आदित्य इज नाउ स्टार्टिंग टू टेक सम पोजीशन एज वेल along with his whole game stance. आदित्य but still he needs to score. Either Karman और आदित्य they need to score, otherwise एक क्लियर लीड नहीं मिलेगा तो गेम नंबर 2 के अंदर दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है क्रिएट हो सकता है. फॉर नाउ passes are flowing in for Aditya, clear opportunity Aditya, and he makes the most out of it. He makes the most out of it. पुस्कस का इस्तेमाल करके he gets a great goal, and what a brilliant goal coming in. एक बहुत important time पे आया है. Even look at the जी. possession stats. 60-40 in the favor of Karman Tikka, but क्योंकि Karman has not been able to net the first one, lead में आदित्य दुबे, and it will remain the same if Aditya is able to defend this attack properly. बनाने की कोशिश जरूर है यहाँ पर एक अच्छा खासा अटैक करमान टिक्का की तरफ से. लेट्स सी. जी नहीं बनाया जा पाएगा. एक हार्ड टच आएगा बॉल के ऊपर जिसके चलते एक गोल किक जो है वो अवॉर्ड कर दी जाएगी आदित्य दुबे को. There is really no stopping the defensive power जो अभी तक आदित्य दुबे अपने साइड से इतना strongly hold करके रखे. We haven't even seen a clear opportunity जिसको हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि जी हाँ मिस हो ही गई थी. आदित्य meanwhile with the ball once again passes his way towards the side of Puskas. Now he has a chance to net in, but somehow the defender comes up with a great tackle. Not to mention कि यहाँ पे अपने साइड से ज्यादा offensive mindset के साथ नहीं खेला जा रहा है. अभी भी आदित्य दुबे now is at a very risky position. A claw pass across could have really made some changes, created some opening for the side of none other than Karman Tika. But एक बार फिर यहाँ पे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से नानी को दिया गया down the field. यहाँ पे आ जाएगा एक शॉट का प्रयास and well he gets it, but the dive and the keeper defense, and then comes the goalkeeper who is there to just be that one barrier between you and between the ball and the net for the side of Karman Tika. And एक बार फिर we are going to continue with a 1-0 only and only 13 minutes in game remaining. This is really gonna mean that Aditya Dubey now, even if he don't get the possession, he just want to make sure that he is going offensive, building up those passes rather than creating opportunities to score for himself. No, for sure. And even for the side of Karman Tikka, he also needs to make sure that he gets a single goal for himself. Although हारेंगे तो भी end of the world नहीं है, because he will get another game. Second leg के अंदर comeback का जो मौका है वो जरूर रहेगा. बट क्या वहां तक छोड़ना चाहेंगे करमान? अटैक बना हुआ है, कॉर्नर किक से यहाँ पर उनको स्टार्ट करना है ना, ये शॉर्ट कॉर्नर पे. जी हाँ, शॉर्ट कॉर्नर के साथ शुरुआत करेंगे. नाउ द बॉल वाज विद मिख्तारियन. एक एरियल बॉल डाली जरूर गई थी इन द पेनल्टी एरिया, but it will be successfully defended by Aditya, and now the ball back in his possession, and he's trying to make that counter attack work. काफी अच्छे passes यहाँ पर flow through करवाने में Oh कामयाब हो चुके हैं, and no. finding even Puskas in between. Oh, Puskas to dribble past the defender was not successful in doing so, and उसी के oh. चलते बॉल वापस से पोजेशन में आती हुई नजर आ रही है करमान टिक्का के. करमान, he just survived. He somehow just survived in that particular area. But meanwhile, Mkhitaryan trying to get another attack coming in, but Aditya Dubey, he will successfully defend it and let the players of Karman Tikka fend off the ball. Josh from the side of keeper Fritz was just amazing. Just look how panicking situation it was. Rather for the side of Aditya, either he could have netted in by scoring it, either he could have even went in to go on for a chip shot. But man, the keeper, the chart, that was something which we really talked about. The defense coming in from the side of Aditya Dubey, that's now as promising as the side of Karman Tika as well, but not giving him a single opportunity to score. Rather, we had two shots on target, but still, the Yes. defender and keeper, they played a key role in the entire game. And I believe if we go to the leg two, this is the first time that after a 1-0, they still stand a chance. And not only a comeback, but a whole setback, pulling off the whole entire League 2 game could be possibility from the side of Karmantika, who would eventually help him get inside the grand finals. Oh, for sure. I mean, अगर इसी तरीके से आदित्य दुबे भी अगर अपना गेम खेलते गए, if he's able to halt it at a 0 score line, this game is just over. फिर यहाँ पर करमान टिक्का हमें थर्ड पोजीशन के लिए शायद लड़ते हुए नजर आए, बिकॉज अगर स्कोर करने में सेकंड गेम में करमान कामयाब नहीं होते विद एन एक्स्ट्रा गोल, बेयर इन माइंड आपको गेम जीतना पड़ेगा. करमान टाई से काम नहीं चलेगा. सो दैट इज समथिंग आई वुड लव टू सी कमिंग इन फ्रॉम करमान टिक्का. किस तरीके से वो लेग नंबर 2 खेलते, बिकॉज लेग नंबर 1 हैजंट गॉन हिज वे.
1-0 is the score. 1-0 is the score line at which this leg has not yet ended. पॉज़ किया गया है आई गेस तरुण यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए पॉज़ किया गया है एंड आई होप सो जब हम पॉज़ के बाद देखें जो लास्ट के 6 मिनट बचे थे आई गेस 84th मिनट इज़ द जी, जी। पोज़ीशन जहाँ पर हमें एक छोटा-सा पॉज़ देखने को मिला था। बट लेट्स जंप बैक लास्ट के 6 मिनट्स के ऊपर भी एक बार जल्दी से नज़र जो है ओके नेवर माइंड आई गेस लेग नंबर 1 इज़ येट टू बी प्लेड। Well, it's the remaining 10 minutes of the game, Fritz, which really means ओह ओके। the timer is running down. You don't have much time. Need to make the most at this point of time. And that's where that 1-0 scoreline would really happen to be quite, concerning. Aditya Dubey, just look at the defense. He is just phenomenal. Each and every player of his is down the line below the half line. At this point of time, this is going to be one concerning point which really Aditya needs to realize that he is at a winnable position, but how far can he get with just a one goal lead? पासेस पासेस लगातार निकालने की कोशिश करी जा रही है ऑल्दो सैंचो Okay. उनको बार-बार यहाँ पर पोज़ीशन जो है वो रिटेन करने नहीं दिया जा रहा है ज़्यादा देर तक एंड डिफेंस फ्रॉम आदित्य वाज़ जस्ट परफेक्ट द डिफेंस वाज़ जस्ट परफेक्ट एंड हियर द पासेस आर फ्लोइंग इन एज़ वेल एक काउंटर अटैक बनाने की कोशिश है, नहीं बन पाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे इंटरसेप्शन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं करमान की तरफ से। लास्ट 3 मिनट्स ऑफ द गेम नाउ दिस इज़ समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ये लास्ट के 3 मिनट में अगर गोल कंसीड कर दिया यहाँ पर तो आदित्य काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने आप से नाराज़ रहेंगे। बॉल करमान के पास ट्राइंग टू मेक दैट प्ले नानी प्लेज इट इन टुवर्ड्स सैंचो जेडन सैंचो अगेन गोइंग फॉर अ Oh, लॉट ऑफ स्किल ओवर देयर एंड इसी के चलते गेम जो हमें समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेग नंबर 1 इज फाइनली ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वो जो एक गोल का लीड है आदित्य दुबे he still maintain that. man, I believe Aditya Dubey, even though, having a good lead, there was a single point where Karman Tika did have that one spark that he got Yes. this. He really has this, just look after that position going over 60% now. You are giving a ball control. He is trying to build up some opening, trying to go midways through the through balls. That is something which is not working on. But even if you analyze the side of, none other than Aditya Dubey, उनका जो एक efficient pass था through the world उन्होंने back off लिया उस ball से Yes. ही tried to make sure that वो shot like अपने side से he's not sprinting his way through the D box, rather going in with some good skill move and then getting the opportunity to kick with some of the opposite leg. From a right leg we could have expected, but the left leg goal we got to see, that was kind True. of something which was exciting for me as well. But still, keeper, man, he was left alone in front of the whole I'll say, entire situation right there. There was no defense at place as well. Aditya, meanwhile, trying to get each and every defender we saw, not every time. He was able to beat the defense, one defender, second defender, third defender, and then he gets intercepted. That is something which Aditya might really want to get some aerials or some crosses to beat that. ओह! फॉर श्योर लेट्स जंप राइट इनटू हाइलाइट्स टू सी ऑल ऑफ दोज़ प्लेस वन्स अगेन तरुण क्योंकि हाइलाइट्स Yep. भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो रहने वाले हैं एंड राइट ऑफ द बैक अटैक दोनों ही टीम्स की तरफ से बहुत शुरुआत से किया गया था। यहाँ पर एक अटेम्प्ट आया, काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं कहूँगा गोल कीपिंग देखने को मिली फ्रॉम द साइड ऑफ आदित्य दुबे एंड उसके बाद दिस वाज़ नॉट द फर्स्ट गोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग और वाज़ दिस? ऑलराइट सो ओवररन कर गए थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लेयर थे ही रैन अ बिट मोर। फ्री किक्स एक ऐसी चीज़ है सेट पीसेस जो काफ़ी देखने को मिले करमान के पास बट जी. he was not able to make the most out of it. This was a great fake. This was a great fake जहाँ पर दिखाया कि शॉट ले रहे हैं. Instead goes for those small passes and tried to finish it out. Although keeper तैयार थे उस चीज के लिए. Meanwhile आदित्य he himself had some opportunities of his own. Although convert करने में as such कामयाब नहीं हुए थे. And I believe okay, this was that one opportunity which he really had, but the keeper, man, that was quite in place. As you mentioned about the free kick, a corner kick का भी यहाँ पे opportunity था. Rather, I'd say two before the even first half had ended. But eventually, उतना ज़्यादा succeed नहीं कर पाए. Defender was looking quite in form today. But if we talk about the second half, that's where the opportunity came in for the side of Aditya Dubey. A good through pass, kicking his left leg, using the left leg to get the opportunity and get the opening man. Keeper was just left stunned, but that's another opportunity which we got to see this time from the side of Aditya. No, this was from the side of Karman Tika, but man, Yes. Aditya with the keeper. I mean, the whole team which he has really built it up, the strategies, the tactics, and the defense is something which really needs to be taken care of
even for the second leg, because in case the second leg continues in the same way, where we do see Karma Tika getting a good position, but इतने पोजीशन होने के बावजूद भी वो अपने साइड से सिर्फ 2 शॉट्स और नेट रखे एंड सक्सीड नहीं कर पाए स्कोर करने के लिए, तो दैट वुड बी अ bitter I'll say semi-finale for him, because even after having each and every factor in his favor, he might not get the chance to be in grand finals. ओह! फॉर श्योर, फॉर श्योर। लेट्स सी किस तरीके से गेम जो है टर्न आउट करता है। मीनवाइल वी माइट सी, ओके, आई गेस रेड में ही हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आदित्य। एंड लेट्स सी हाउ डज़ ही वांट टू प्ले दिस वन आउट। फिलहाल एक अर्ली अग्रेसिव स्टांस हमें देखने को मिल रहा है आदित्य की तरफ से। ऑल्दो नॉट मच रिक्वायर्ड, वेल लेट्स सी जेडन सैंचो विद द बॉल, लूकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज। पकीता की तरफ बॉल जो है खिलाई जाएगी, कैंसेलो टू मैथ्यूस। अगेन काफी तेजी से विंग जो है वो चेंज किया गया है। नाउ ट्राई टू गेट पुस्कस इन द मिक्स, बट फर्नांडिस गुड पीस ऑफ डिफेंडिंग कमिंग इन, एंड बॉल जो है वो खतरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नाउ ज़ाहा ऑन द राइट विंग ट्राइंग टू गेट द बॉल पास द डिफेंडर, बट ऐसा होने नहीं दिया जाएगा बिकॉज़ काफी एक अच्छी पीस ऑफ डिफेंडिंग देखने को मिलेगी। नाउ आदित्य on that counter attack, he is looking deadly and he scores. Bruh. Aditya, Oh my he god, scores, and that was not expected at all. This was not man. expected at all, Aditya, कि यहाँ पर एक score आएगा, that too from the side of Aditya. Karman, deep pressure this guy is in. Man, this is going to be so difficult. But Pushkash with that goal between that, keeper and the pole. I mean, that was some amazing, through ball right there. But once again, this time the pressure is being built up from the side of none other than Karmantika. Needed one cross, but taking this much time is something you cannot really afford. You really need to make sure कि ऐसे efficient through balls पे आप जरूर capitalize करें. But once again, gets the opportunity, scores it. But that's missed by an inch right there, to be honest. Because ये एक बहुत ही opportunity हो सकता था, एक बहुत ही मैं कहूँगा इंस्टा फास्ट यहाँ पे अपने साइड से उन्होंने शूट किया, इवन दो नोइंग कि देयर इज नॉट some good angle right there. But man, that is a good pressure being built up even after like including a goal for a 2-0 in the whole league. Let's see how Aditya is now going to put up his defense at the place. आदित्य needs to be careful because even a 2-0 स्कोर लाइन अगर एक गोल मारने में कामयाब हो जाते हैं यहाँ पर करमान, तो जो 2-0 की स्कोर लाइन है वो ज्यादा देर तक टेक पाएगी नहीं है। लेट्स सी किस तरीके से हैंडल करा जाता है। फॉर नाउ अगेन अटैक बनाने की कोशिश करी जा रही है, बट जस्ट लुक एट द डिफेंस, कमिट ही नहीं कर रहे हैं। जब तक आप विंग्स के ऊपर है तब तक आपके ऊपर कमिटमेंट होगा नहीं। दैट इज समथिंग दैट मेक्स दिस डिफेंस अ बिट मोर वैल्यूएबल, अ बिट मोर प्रोएक्टिव than the other team's defense. Now 2-0 lead, still Oh. Karman trying to penetrate inside the penalty area, but ये फायदा होता है जब आप deep defending करते हो। पास इंटरसेप्ट करिए एंड इंस्टेंटली द बॉल इज बैक इन योर पोजेशन। अब बहुत ये जो कीमती समय है इसको आप पूरी तरीके से वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग करमान वुड नॉट लाइक एट ऑल। Oh. करमान नंबर्स पुट करना चाहेंगे और उस पर काउंटर अटैक जो है बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से खेलना चाह रहे हैं यहाँ पर आदित्य। ही जस्ट टेकिंग हिज टाइम, मेकिंग श्योर कि एक छोटी सी गलती मिले, एक छोटी सी ओपनिंग मिले, मिली जरूर है ओपनिंग। शॉट लिया बट अच्छा ब्लॉक जो है यहाँ पर डिफेंडर की तरफ से आएगा इन करमान back with possession. 1/4 of the game has really been ended. Now you really need to pace up. ये pace अगर अभी नहीं पकड़ा तो बहुत ज़्यादा आगे चल के उनके लिए problematic scenario बन सकता है. And Zaha with the ball. Now trying to make sure कि वो intercept कर रहा है. Well, Sancha Offside. then goes with Zaha. एक बहुत ही अच्छा offside कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल गया. And well, pressure ज़रूर बन रहा है. हर एक opportunity पे जिस तरीके से pinpoint किया जा रहा है ना आदित्य दुबे के द्वारा, that is something which I'm really liking at this point of time. Karman Tika meanwhile once again struggles a bit. That's a good ball, but he Oh, passes it back to the player, and that's a good piece of defending and keeping. Corner kick, एक और opportunity, बहुत अच्छा cross, but keeper बहुत ज़्यादा charged in है, and he gets the ball in his hand at this point. काफी काफी एक रिस्की मूव हो सकता था वहां पर। अगर एक अच्छी लूपिंग बॉल चली जाती है तो कीपर तो पूरी तरीके से आउट ऑफ पोजीशन थे, बट ही गेट्स इट, ही कलेक्ट्स इट, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। एंड नाउ करमान बैक इन द अटैक अगेन। द डिफेंसिव ड्यूटीज फ्रॉम पाकिता, जिस तरीके से जो राइट विंग है ये पूरी तरीके से जाहा से, जिसे हम कह सकते हैं डोमिनेट करके रखा हुआ है। उतने रन जाहा को अभी तक बनाने दिए नहीं गए पाकिता की तरफ से। एंड अगेन बॉल पास करने की कोशिश थी, एक थ्रो इन था, बट पोजीशन वापस से आदित्य लेने में कामयाब हो चुके हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आदित्य इज डूइंग जस्ट परफेक्टली। लेट्स सी कितनी देर तक कंटिन्यू कर पाते हैं आदित्य इस चीज को। Matthews with the ball. Matthews is trying to get past the two defenders that he was currently being marked by. काफी अच्छे passes निकाले गए। एम्बापे great turns looking for a pass, but Oh. अच्छा interception आएगा डिफेंस का। And once again करमान थोड़ी और देर तक इस खतरे को टालते हुए।
Man, इतना easily possession दे देना वो भी आदित्य दुबे को, that is not something which we really expect. Maybe a misclick could have been the case कि उन्होंने इतना अच्छा clearance दिया that it did not landed up to the player. But once again, अपने साइड से विंग में पास देने का प्रयास, एक क्रॉस जरूर यहाँ पे बन सकता है, but the through ball, both the players gliding in each other, and that was a missed opportunity. Aditya Dubey, that could have been the 2-0, but still the corner is there. अभी भी risk बहुत ज्यादा बना हुआ है, and धीरे धीरे करमान टीका is just losing on each and every ob. डिफेंस पे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर अभी फिलहाल के लिए बिल्डअप हो चुका है, थोड़ा यहाँ पे पीछे बॉल को यहाँ पे पास किया गया टू एक्सचेंज द विंग, बट लुक एट दैट एंटिसिपेशन, अ गुड एंटिसिपेशन राइट देयर. डिफेंस एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्लियर ऑफ किया, प्लेयर को यहाँ पे पास ऑन कर चुके हैं. नाउ ही इज टेकिंग इट टू द अदर हाफ ऑफ द फील्ड, ट्राई टू मेक श्योर कि ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन पाए. पासेस हिज वे थ्रू द साइड ऑफ फर्नांडिस, नाउ टू McKinney. लेट्स सी क्या ये एक 1-all, at least a 1-all could have really mean a lot. 5 minutes remaining down the clock till the whistle blows. Let's see. McKinney once again, Nani ko वहां पे ball मिल चुका है, and once again tries to get aggressive through the through wall. Not some ideal shots or plays right there, but still Aditya Dubey, man, he is looking quite powerful at this point as well. करमान करमान Oh my अटैक अच्छा है God. एंड स्कोर करने में भी कामयाब हो जाएंगे. जेडन सैंचो विद अ ग्रेट गोल एंड करमान equalizing for this game, but he still has a lot of heavy lifting to do for the other one. 1-0 से पिछला गेम हारे थे, तो एक गोल और अभी स्कोर करना इनके लिए बाकी रहेगा. Now let's see Aditya, how does he go about defending, or rather how does he go about this particular attack that he's trying to make. पीछे की तरफ पास जरूर किया गया. Ibanez with the ball plays it to Cuadrado. अच्छी थ्रू बॉल निकाली गई है. McKennie looking for a shot, releases it, but the keeper saves the day. Now Puskas, लेफ्ट हैंड साइड विंग के प्लेयर को खोजने की कोशिश करी गई थी, बट उनको डिनाई करा जाएगा. दैट इज द हाफ टाइम विसिल. दैट इज द हाफ टाइम विसिल. एंड अगर आप मेरे से पूछे तरुण, तो ये हाफ टाइम से पहले गोल आना बहुत ज्यादा जरूरी था करमान के लिए, बिकॉज गेटिंग द सेकंड गोल, गेटिंग 2 goals बैक टू बैक इन अ सिंगल हाफ, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता. बट क्योंकि क्योंकि ये पहला गोल इन्होंने यहाँ पर स्कोर कर दिया है, सेकेंड हाफ लेट्स सी किस तरीके से खिलवाना चाहेंगे अपने प्लेयर्स को. Wait a minute. Is that Cristiano not being inside the play for the side of none other than Aditya? Because I really believe what's going on. I'm kind of just tense right here. पहला गोल यहाँ पे concede किया फ्रिज, equalize करना बहुत ही सही समय पे, वरना second half the pressure would have been just at the top. Because 2-0 it would have really mean कि उनको 3 यहाँ पे जरूर स्कोर करना पड़ता. Pressure is a bit off the shoulders. Still with a 1-goal lead, it's Aditya Dubey. Let's see, Aditya Dubey right now has a great deal of defense that he has to deal with against the side of करमान टिक्का. नाउ टिक्का वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि एक एक अच्छी बॉल बनाए, उस पे कैपिटलाइज करे, रादर देन ट्राइंग टू अटैक ऑन एवरी बॉल दैट ही गेट्स. विंचेस विद द बॉल, क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाह रहे हैं अपने लिए. सैंचो को खोजा भी गया है. सैंचो Oh my God! बहुत ज्यादा What? स्पेस यहाँ पर सैंचो को दिया गया, एंड सैंचो विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ही गेट्स द सेकंड वन, एंड वी आर लुकिंग एट एन इक्वलाइजर, लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज द इक्वलाइजर, एंड यहाँ पे अब प्रेशर जो है वो पूरा आदित्य के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज विद टिक्का नाउ. Man, Sancho did had the whole resurrection for the side of none other than one and only Tika, but Karman Tika once again really need to maintain the pace. He did get that momentum. The past 2 goals are from his side. Once again he gets the interception. Pass ko yahan pe totally anticipate kiya. Ab apne side se ek offensive move, and he gets the 3rd goal for this time. This is going to be Sancho with the hat trick for tonight, and what an amazing piece of, display of gameplay right here. Back to back 3 goals Sancho apne side se nikal chuke friends. This is where I'll say semi-finale abhi just sparking up hua hai. We were just waiting for the side of none other than Karman Tika to beat that defense. And Aditya Dubey in the second league match, the defense is something which he is kind of lacking a bit, and that is now looking good from the side of none other than one and only Karman Tika. Once again takes the ball to McKinney, passes his way through those amazing wings, but still बहुत safe play करने का यहाँ पे प्रयास करना होगा, because Aditya Dubey anytime could get a chance to score. He won't miss it for sure. अपने राइट विंग से यहाँ पर एक और अटैक जो है वो बनाया जा रहा है. ग्रेट पास इन द मिक्स एज वेल. शॉट रिलीज नहीं करने दिया मिख्तरियन को शॉट रिलीज नहीं करने दिया, जिसके चलते द डिफेंसिव ड्यूटीज वर जस्ट परफेक्ट. नाउ लेट्स सी सम सब्स्टिट्यूशंस कमिंग इन. फाइनली रोनाल्डो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बट दिस टाइम नॉट इवन एज अ स्ट्राइकर. तरुण, दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि रोनाल्डो को आपने एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर नहीं रखा है. इंस्टेड ही इज द वन
who will make the passes for his team. Now ये एक interesting choice है, because again Ronaldo passing capabilities अच्छी जरूर है, but उनके जो finishes है वो कहीं ना कहीं गेम के अंदर चार चांद लगाते हैं. So let's see किस तरीके से ये गेम जो है उनकी तरफ से खेला जाने वाला है. Now again starting with a short pass towards Ronaldo, playing it back towards Fernandez. अच्छा क्रॉस निकाला है विंचेस जूनियर की तरफ. Mkhitaryan with the ball. Mkhitaryan looking for opportunity. Sancho once again, the guy with the golden leg gets a great tackle on himself, and Aditya ball के साथ रन बनाते हुए. पूरी तरीके से अपने साइड से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट अपने लिए एक बहुत अच्छा अग्रेसिव प्ले एटलीस्ट एट बिफोर वी गेट इनसाइड द लास्ट 10 मिनट्स वो बना पाए, बिकॉज़ वंस ही नोज कि यहाँ पे अरमान टीका के पास यहाँ पे पोजीशन आ जाता है तो देयर इज नो लूजिंग. एंड लुक एट हाउ स्ट्रांगली दोस गोल्स आर बीन स्कोर्ड, दोस passes आर बीन प्लेड, बट अ गुड वॉली पास वंस अगेन द थ्रू बॉल कम्स इन, passes अवे पेड बैक, बट स्टिल पकीटो को यहाँ पे बॉल मिल जाता है, अपने साइड से आगे पास किया जाएगा, पुस्कस इज नाउ विद द बॉल, बट इंस्टेंटली यहाँ पे मेकिनी के द्वारा इधर इंटरसेप्ट हो जाएंगे. एक बहुत ही अच्छा लॉ पास हमें देखने को मिल जाता है एक बार फिर उस राइट हैंड विंग पे. रन पूरी तरीके से बनाया जा रहा है. देयर ही गोज विद द क्रॉस एंड द हेड कम्स इन, बट द कीपर totally blocks it off, and still the corner kick comes in at this point of time. एक और एक यहाँ पे अच्छा cross and the header comes in, and that's a goal. That's the fourth goal coming in from the side of Karman Tika. Aditya Dubey, what's happening inside the game? Man, what do you got to say about that goal? That was just such a beautiful piece of pass, and then a goal. I'll say one of the goal of the day for me, especially. Oh, what a brilliant ball inside the D first of all. And who was the scorer, Tarun? ये मैं जरूर देखना चाहूंगा, because I think it was Ronaldo who comes in with the Okay. header and gets the score. I'm not completely sure. कि is it Ronaldo who has scored it? कुछ substitutions आ रहे हैं, and that it is gonna be Scheller, I guess, if I Okay. pronounce his name correctly. So that is gonna be the fourth goal for the side of टिक्का. And जो trail कर रहे थे टिक्का, उन्होंने कहा लाइए भैया जितनी के गोल से हम ट्रेल कर रहे हैं उतनी या उससे ज्यादा की भी एक लीड बना ली जाए. आदित्य जरूर इक्वलाइज करना चाहेंगे, बट उनको डिनाई करा जाएगा. एंड अगेन अ ग्रेट पीस ऑफ डिफेंडिंग कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ टिक्का. Just ignoring the fact that even we have been started off with the last potential half. यहाँ पे एक बार फिर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने का प्रयास, एक बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे लिया गया, but somehow goalkeeper becomes that one single wall who is just not ready to give up on the game quite yet, even after being down to 2 goals. अब 2 गोल सिर्फ चाहिए इक्वलाइज करने के लिए. एक और एक बहुत ही बेहतरीन पास यहाँ पे आ जाते हैं. रोनाल्डो मिसिंग ऑन टुवर्ड्स दैट स्ट्राइकर पॉइंट. आई बिलीव कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस मेकर जरूर बन रहा है, बट वेल एक बहुत ही अच्छा क्रॉस ऑफ साइड का यहाँ पे कॉल इंस्टेंटली आ जाता है. एंड वंस अगेन द बॉल गोज टू द लेग्स ऑफ नन अदर देन करमान टीका. Meanwhile, slowly, steadily pouring upon the side. A chip shot is really anticipated, but wow, that's a goal! What an amazing display of skills right there, Mbappe. Oh, Man, somehow defines, somehow equalizes it to a 3-4, if I'm not wrong. 3-4 का लीग स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा. बहुत ही अच्छे पासिंग एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रहा है. But Karman Tika, now he knows कि this is where the pressure might build on for him. One single score coming in from the side of Aditya Dubey could really even a situation. Each and every 4 goal that he got to score in this league match, well, that is going to mean nothing. But once again, Vicinius with the ball, trying to get some weight, trying to make some plays right in. But धीरे धीरे अपने साइड से उस डिफेंस को ओपनाइज करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Sancho, the man with the hat trick, can he go for the fourth one? Well, passes the way through, once again gets the ball, and yes, he gets the goal, the fourth goal for the game. And this guy Sancho. is at he's at another level, I believe, today. सैंचो जिस तरीके से इन्होंने अभी तक का गेम खेला है, दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड खरमान टिक्का जो जो लिटरली रिवर्स स्वीप आया यहाँ पर तरुण. दैट इज जस्ट इंसेन. गोल्स और गोल्स दागे गए इस प्लेयर की तरफ से. व्हाट अ ब्रिलियंट पीस of display coming in. What a brilliant piece of display coming in from the side of Karman Tika, showing why he is the chosen one from our country. And जिस तरीके से लगातार गोल्स पे गोल्स दागे गए हैं, that was just insane. Truly, man, I believe this was just the game number one. We have another game quite lined up, which is going to be Navneet versus Aman. Now, these two are some of the players. These two are some of the players जिन्होंने qualifiers में भी मैं कहूँगा नहीं कि हमें बिल्कुल भी निराश किया था. Yes. Their plays have been something quite exciting. They did got that one thing in them which we were really kind of expecting till the very end.
from Karmantika, and believe me, he did not fail to deliver to us in the end of the half. ओह! फॉर श्योर कर्मा टिक्का जिस तरीके से वापसी करी है, कमबैक करा है, 1-0 पहला दूसरा लेग स्टार्ट होता है, पहला गोल खुद पे कंसीड करवा लिया। बट उसके बाद जो लगातार गोल्स पे गोल्स बिल्कुल बिल्कुल बहाए हैं। दैट वाज़ जस्ट अमेजिंग टू विटनेस, दैट वाज़ जस्ट अमेजिंग टू विटनेस एंड लेट्स हैव अ लुक एट हाइलाइट्स एज़ वेल। लेट्स सी कि ये जो गोल्स है वो किस तरीके से स्कोर करे गए बिकॉज़ इट वाज़ एन इवेंटफुल इवनिंग। दिस डेफिनिटली वाज़ एन इवेंटफुल इवनिंग तरुण। वेल ट्रूली एंड आई बिलीव कि जैसे कि हमने हाइलाइट्स पे नजर डाला ये एक गोल दिस लुक्ड एट इफ दिस इज द एंड गेम राइट नाउ ऑफ द साइड ऑफ आदित्य दुबे बट व्हाट वी थॉट इज द एंड इज जस्ट was just the start cause now was this time where he really came up with an equalizer not in the 20th or 30th ish time but yep at the very end of the first half and that was a great piece of defense right there यस। अगर ये गोल कंसीड कर देते तो शायद पूरा का पूरा लीग हमें इधर इक्वलाइजर और 4 ऑल पे देखने को मिल जाता था but that was not the case, was it? नहीं कर पाए एंड कर्मा जस्ट बिफोर हाफ टाइम जिस तरीके से उन्होंने इक्वलाइज करा था, इस चीज के ऊपर हम लोगों ने काफी बात भी करी थी तरुण कि इक्वलाइजर जो है हाफ टाइम के पहले मारना इंपॉर्टेंट था एंड स्कोर किया। एंड उसके बाद तो इट वाज जस्ट अ वन वे स्ट्रीट जहां पर लगातार करमान ही वेंट इन फॉर गोल्स एंड गोल्स एंड गोल्स। टर्न्स की आप बात करिए, टचेस की आप बात करिए, जेडन सैंचो के तो पैरों में आग लग गई होगी। पक्का फायर एक्सटिंग्विशर निकालना पड़ा होगा इस टीम के खिलाड़ियों को to suppress that fire because 4 goals, एक प्लेयर 4 गोल्स दाग रहा है। दैट इज समथिंग यू डू नॉट सी ऑन अ डेली बेसिस। ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है एंड आज जो है दिखाने में करमान टिक्का कामयाब रहे। सो अ ग्रेट पीस ऑफ गेम कमिंग इन फ्रॉम करमान टिक्का शोइंग कि जी हाँ पहला गेम में आप जरूर हमसे ऊपर रह सकते हैं बट देन व्हेन वी कम बैक हार्ड, वी कम बैक स्ट्रांग and that is exactly what they did and this goal was man another beautiful जिस तरीके से वो हेडर आया कीपर चाहते तो शायद आगे आके कलेक्ट कर लेते but that was not the case। काउंटर पे एक गोल स्कोर करने में कामयाब जरूर हुए थे बट उसके बाद करमान रिप्लाई विद गोल ऑफ हिज ओन येट अगेन एंड उसके बाद ज्यादा टाइम बचा नहीं था आई गेस उसी के चलते प्लेयर जो है ही थॉट लेट्स नॉट जस्ट कंटिन्यू दिस गेम क्योंकि लगातार गोल्स हमारे इस तरफ से लीक होते हुए नजर आ रहे हैं सो दैट इज गोना बी इट। दैट इज गोना बी सेमीफाइनल नंबर 1 जहां पर कर्माटिक का 6-3 की एक ओवरऑल स्कोर लाइन से हमें ग्रैंड फाइनल में क्रूज करते हुए नजर आ जाएंगे तरुण। Believe me, this was the 1-0 before we started off the second half, before the entire League 2 game was begin. And kahin na kahin, I'll say first half tak bhi it was nothing but a 2-1 inside the favor of Aditya Dubai. Now, what happened inside the second half of the last league match was something impeccable. 5 goals from the side of Karman Tika, just one single goal. Aditya, being that one guy who we talked about, consistent पूरी तरीके से रहे हर Yes. एक हाफ हर एक मैच में वो एक एक स्कोर किया बट दैट 5 स्कोर द हैट ट्रिक लाइक आई विल से द 4 गोल हैट ट्रिक फ्रॉम द साइड ऑफ सांचोस मैन ही वाज द मैन टू बी वॉच आउट फॉर द प्लेयर टू बी वॉच आउट फॉर एंड आई बिलीव Yes. ग्रैंड फिनाले में भी बहुत टफ टाइम देने वाले हैं वो इन्हीं प्लेयर्स के संग ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। आई मीन ग्रैंड फिनाले के अंदर जो भी करमान को मिलने वाला है, इवन फर्स्ट लेग के अंदर वो अगर 2 या 3 गोल की भी लीड लीड ले लेते हैं, तो खुश नहीं हो सकते कि वी हैव अ कंफर्टेबल लीड बिकॉज़ करमान अ प्लेयर लाइक दिस, ही कैन कम बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिनेरियो। बट तरुण नाउ इनफ अबाउट गेम नंबर 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार यप था। यप बट अब चलते हैं मैच नंबर 2 की तरफ बिकॉज़ दिस गेम इज़ आल्सो अंडर वे बिटवीन अमान वारसी एंड नवनीत जी। Now both of these players they are they definitely have to be watched out for। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा बट इन दोनों प्लेयर्स की जो स्टोरी लाइन है अभी तक आने की इस सेमीफाइनल्स के अंदर दैट हैज जस्ट बीन अमेजिंग। नवनीत वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग विक्ट्रीज इन द मेन इवेंट डे नंबर 1 बट क्या आज कंटिन्यू कर पाएंगे इस चीज को अगेंस्ट अमान वारसी, ये देखने वाली बात रहेगी आज तरुण। बहुत ही सही कहा आपने एंड आई बिलीव कि दोनों प्लेयर्स फिलहाल अपने साइड से पूरी तरीके से सेटअप हो जाएंगे विद दोस प्लेस विद दोस अमेजिंग फॉर्मेशन बट फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अमान के द्वारा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है वेल गेम यहाँ पे बिगिन होता है मार्किनोस को यहाँ पे बॉल मिल जाता है ओके स्किल यहाँ पे डिफेंस में यूज करना दिस समथिंग क्वाइट रिस्की बट मैन सैंचोस जोन्स अपने साइड से हर एक प्लेयर यहाँ पे फिलहाल के लिए चार्ज इन करते हुए देखने को मिल जाते हैं बहुत ही अच्छा टैकल जरूर यहाँ पे करने का प्रयास है बट स्टिल अमान विद द बॉल इज जस्ट लुकिंग क्वाइट इनविक्टेबल टू जस्ट नॉट गिव अप ऑन द पोजीशन क्वाइट येट अमान लेट्स सी फॉर नाउ नवनीत के पास हमें यहाँ पर बॉल देखने को मिल रही है एंड वारसी स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट द फर्स्ट टच फॉर हिमसेल्फ। अच्छा अटैक बनाया जा रहा है यहाँ पर नवनीत की तरफ से
ट्राई किया था डिफेंडर को बीट करने का, बट डिफेंडर तैयार थे। ही न्यू दैट दिस काइंड ऑफ अटैक कैन कम इन, एंड उसी के चलते यहाँ पर उनसे बॉल जो है वो छीनी जाएगी। नाउ अमान, ग्रेट ग्रेट पीस ऑफ स्किल ओवर देयर, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफेंडर को छकाने में कामयाब हुए थे, बट देन फाइनली गोस फॉर द पास। बट वारसी, अच्छा अटैक बनाने की कोशिश है उनकी तरफ से, ग्रेट पासिंग Oh, एज वेल। He is looking for that space. He is looking to get the defenders out of position, and wow. that is exactly what he does. काफी अच्छी तरीके से डीएमआर का इस्तेमाल करके डिफेंडर्स को आउट ऑफ पोजीशन यहाँ पर पकड़ा, ड्रिबल थ्रू किया, एंड ही गेट्स द फर्स्ट वन। FC Barcelona, that is going to be against Aman. Aman gets the first goal for himself. Man, Aman, what an amazing, I'll say gameplay right there. Apne side se between three fielders, took the pass. That was quite some risky move, giving these vertical passes, and then Neymar doing the job with his skill. Man, that was just amazing. Jones with the ball at this point of time. Dekhte ki kya ek baar fir Neymar tak ball pahuncha batayega. Mbappe was really between the defender right there. Defender just coming between those passes. Once again, थोड़ा अपने साइड से प्रोग्रेस किया जा रहा है. नवनीत need to make sure कि ये जो लीड गवाई है फर्स्ट हाफ के अंदर ही जरूर कवर अप कर ले. मुश्किल रहेगा नवनीत के लिए, बिकॉज़ अगेन वारसी ज़्यादा देर तक बॉल दे नहीं रहे नवनीत को। पोज़ेशन अपने पास मेंटेन करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। लेट्स सी किस तरीके से इस पोज़ेशन का फ़ायदा नवनीत उठाने में अमान जो है वो उठाने में कामयाब होता है। अमान वन्स अगेन ऑन द अटैक। नियमार लुकिंग टू फिनिश, बट ही विल बी डिनाइड। मिख्तारियन विद द बॉल, प्लेइंग इट बैक टुवर्ड्स जोन्स। एम्बापे एम्बापे बैक टू मिख्तारियन। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर बॉल जो है मूव फॉरवर्ड करवाई जाएगी। अगेन अ ग्रेट पास कमिंग इन, but this time Navneet was ready with the Uh, defense. He will be able to okay. keep the ball in play. कॉर्नर नहीं कंसीड करेंगे। काफी देर बाद पोजीशन आई है। लेट्स सी नवनीत किस तरीके से फायदा उठाते हैं बॉल का। देखिए सिर्फ 18 मिनट हुआ है, टेंशन का माहौल ऑलरेडी नवनीत के लिए बहुत ज्यादा बिल्ड होना बिगिन हो चुका है, बिकॉज़ जस्ट लुक एट द पोजेशन पीरियड राइट देयर एज वेल। विद इन दिस टाइम द वे नवनीत हैव बीन रियली स्ट्रगलिंग टू गेट द कंट्रोल, बहुत ही जल्दी यहाँ पे टैकल आउट भी हो जा रहे हैं। ही इज नॉट इवन एबल टू टेक द बॉल टुवर्ड्स द डी बॉक्स इनसाइड, द साइड ऑफ नन अदर देन नवनीत's opponent player. But let's hope that Navneet really gets his chance and gets himself at a good position. एक थ्रू बॉल का प्रयास जरूर था, बट एक पास में तब्दील हो जाता है। विंग अभी भी अवेट कर रहा है। यस, यहाँ पे थोड़ा अच्छा अल से थ्रू बॉल यहाँ पे निकाला गया, एक बहुत ही अच्छा अराउंड द बॉल। नाउ देयर इज अ लो पास बीइंग नीडेड, बट द डिफेंडर कम्स इन आह, एट द राइट प्लेस एंड मैन, अमान somehow comes out of that danger zone. काफी काफी अच्छी पीस ऑफ स्किल हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, बट वारसी तैनात थे अपने डिफेंडर्स के साथ। वारसी इस चीज के लिए तैयार थे, एंड ही इज एबल टू विन बैक द पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। नाउ नियमार passing it to Mbappe, but not the best possible pass coming in for Aman in that particular situation. पोजीशन खोएंगे, अपने पास वापस लेने में नवनीत बॉल को कामयाब हो चुके हैं। बट लेट्स सी किस तरीके से नवनीत जो है अब यहाँ पर खेलना चाहेंगे, बिकॉज अगेन द पासेस आर फ्लोइंग इन। मेन काम आएगा यहाँ पर फिनिश करने का, एंड उसी के बीच उसी को नहीं करवाने का जो परमिशन है वो अमान देते हुए कहेंगे आई डिफेंड माय वे, एंड अब एक काउंटर अटैक निकालने की कोशिश है। जी बिल्कुल, 28 मिनट समाप्त हो चुके हैं ऑलमोस्ट। फर्स्ट हाफ का भी यहाँ पे जो है हाफ हमें समाप्त होते हुए नजर आ चुके हैं। नाउ इज द टाइम वेयर रियली यू नीड टू कोप अप टू द पेस, और नवनीत स्टिल स्ट्रगलिंग अ बिट। दैट्स अ ग्रेट पास एंड द बॉल दैट्स इन एम्बापे। ओके, इट्स नेमार, एम्बापे विद द असिस्ट, Neymar with the score. He gets the 2 goal for himself, and already Arman is now feeling at this point of time. Navneet अब प्रेशर बहुत ज्यादा बन चुका है, because 30 मिनट्स के अंदर आपने 2 गोल कंसीड कर लिया है। मे बी द थर्ड वन इज कमिंग इन, because look how dangerously the wing is inside the possession at this point of time. One go through और क्रॉस could do the job, but थोड़ा पीछे यहाँ पे नेमार को पास ऑन किया गया। वियारा कम्स इन धीरे धीरे अपने साइड से, एक बार फिर नेमार को पास, ये एक रिस्की मूव आ सकता है। वन लेफ्ट लेग गोल could have made the job, but Mbappe with the ball at this point of time and well he gets it at the top corner, but the keeper defends it quite well. कॉर्नर कंसीड किया है, सो अभी भी स्टिल नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। अगेन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इनसाइड द पेनल्टी एरिया, और अभी भी उनके पास रहेगी जोन्स लॉन्ग रेंज अटेम्प्ट, बट दिस टाइम द डिफेंडर्स दे डू देयर जॉब प्रॉपर्ली, एंड बॉल जो है हार्म्स वे से कुछ सेकंड्स के लिए तो दूर रख लेंगे। एंड नाउ द पासेस दे फ्लो इन। कैंसेलो, ग्रेट पास टुवर्ड्स रोनाल्डो, बैक टुवर्ड्स अनदर रोनाल्डो ऑफ हिज ओन। अगेन डबल रोनाल्डो सेटअप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एक थ्रू बॉल निकालने की कोशिश, बट अच्छी तरीके से रीड किया वारसी ने, एंड उस चीज को प्रॉपर्ली डिफेंड करने में भी कामयाब रहेंगे। ड्यूड के कीपर एक थोड़ा-सा रिस्की मूव हो सकता था अगर ये पास प्रॉपर्ली जी जी। एग्जीक्यूट नहीं होता। बट दैट वाज़ नॉट द केस, एंड द पास गेट्स वेयर इट हैड टू बी। नाउ नीमार, ग्रेट पीस ऑफ स्किल ओवर देयर, बट नवनीत अपने लिए बॉल जीतने में कामयाब हो चुके हैं, बट एक फाउल और मोर इम्पोर्टेंटली शायद एक ऑफसाइड जो है यहाँ पर रेफरी की तरफ से कॉल किया गया। सो अनदर इंटरेस्टिंग पीस ऑफ
डिफेंडिंग कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ अमान वारसी, इतना ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं थे उनके डिफेंडर्स की ऑफसाइड हो, बट ट्रैप अच्छी तरीके से आई गेस बिछाया हुआ था, जिसके चलते बॉल जो है वापस जीतने में कामयाब हुए हैं। लेट्स सी विल ही बी एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बॉल और नॉट। जेडन सैंचो पिछले गेम के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट था, लेट्स सी क्या वो इंपैक्ट जो है इस बार एक डिफरेंट प्लेयर एक डिफरेंट टीम के साथ निकाल पाते हैं। नियमार टर्न करने की कोशिश की इन बिटवीन दैट स्ट्राइकर्स एरिया इन दैट पेनल्टी एरिया, बट डिनाई किया जाएगा। नवनीत still trying to defend. Still, the ball is gonna be with the players of Aman Warsi. Sancho with the ball, playing it to Vieira. Vieira, great pass towards Mkhitaryan. Mkhitaryan playing it back towards his own teammate. एक अच्छी थ्रू बॉल निकालने की कोशिश, बट नवनीत के Uh, डिफेंडर्स तैयार तैनात, बट एक मिस पास। ये गलत पास के चलते बहुत बड़ा ब्लंडर जो है नवनीत के डिफेंस की तरफ से हो सकता है, और अच्छी तरीके से छकाया। फिनिशिंग Ooh. थोड़ी सी खराब क्योंकि कीपर को फाइंड करेगी, एंड जस्ट एट द 45th मिनट मार्क एक कॉर्नर जो है कंसीड कर दिया गया है। हेडर टुवर्ड्स द गोल will be denied. बॉल क्लियर करनी चाहिए ताकि हाफ टाइम कॉल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द रेफरी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन। हाफ टाइम कॉल किया जाएगा, बट उसमें भी यहाँ पर हमें नवनीत ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। नामान with that comfortable lead for himself. Man, I believe that corner could have really at least confirmed a great lead. 2 goal की lead, Fritz. I believe इसको cover up करना बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा difficulty already बना देता है हमारे none other than अवनीत के लिए, and उस चीज़ के ऊपर he really need to get that defense at place, because each and every time you see डिफेंस को यहाँ पे टोटली आउटप्ले किया जा रहा है. यू हैव सम ऑफ दीज अमेजिंग यंग स्ट्राइकर्स, एम्बापे ऑन दैट साइड, वी हैव नन अदर देन जोन्स, देन इट्स गोना बी नेमार. हर एक प्लेयर यहाँ पे अपने साइड से वो ऐसी स्किल पोटेंशियल रखता है जो आपको टोटली आउटप्ले कर पाए विद जस्ट द कंट्रोल ऑफ द बॉल एट द क्वाइट एफिशिएंट टाइम. वंस अगेन नवनीत थोड़ा स्ट्रगल करते हुए बॉल यहाँ पे पूरी तरीके से अपने साइड से एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले दिखाया जा रहा है अमान के द्वारा, एंड ही गेट्स अ गुड कंट्रोल. प्ले बनाने का प्रयास जरूर एक बहुत ही डेंजर जोन में बन चुका है. जस्ट वन Oh, defender is all he needed to just beat, but somehow does not manages to beat him, and now Navneet is with the ball for himself. नवनीत अटैक बनाने की कोशिश है, बीच में प्लेयर भागे हैं, ग्रेट थ्रू बॉल टू कैंसेलो, बट देन अगेन द डिफेंडर्स आर यूजिंग एवरीथिंग दैट दे हैव, बट स्टिल Navneet, he is able to get that score. He is able to get that score, and ये जो स्कोर लाइन 2-0 दिखा रही थी कुछ देर पहले तक, नवनीत is trying to get very near to that. Again, great piece of defending coming in from नवनीत. अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉल जो है जीतने में कामयाब हुए हैं. Let's see क्या स्कोर को इक्वलाइज करवा पाएंगे इस मूव में, because he has enough balls, he has the strikers ready, but the defenders are too well to get passed through. काफी अच्छे यहाँ पर डिफेंसिव स्किल्स देखने को मिली है. And once again, back with the ball is gonna be FC Barcelona, being controlled by Aman Warsi. वारसी इधर से काफी अच्छे पासेस देखने को मिल रहे हैं. एम्बापे ट्राइंग टू रन विद द बॉल, बट बीच में जो एक छोटा सा चैलेंज आया था, तो यहाँ जी. पर बॉल को आउट ऑफ कंट्रोल फेंका एम्बापे के, एंड करिश्मा ने काफी अच्छी तरीके से उस बॉल को रिसीव किया. ऑल्दो स्टिल वारसी, ही हैज द बॉल फॉर हिमसेल्फ. कॉर्नेट अच्छा पास यहाँ पर निकाला जा रहा है आप एम्बापे की तरफ. एम्बापे नाउ लुकिंग टू गेट अ प्लेयर इन हिज क्लोज प्रॉक्सिमिटी. लेट्स सी किसको खोजना चाहेंगे. वियेरा को खोजा गया है. वियेरा प्लेइंग इट टू नियमार. Oh. नियमार इज द पर्सन हु हैज स्कोर्ड द फर्स्ट 2 गोल्स. फर्स्ट 2 गोल्स के अंदर उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था. सेकंड स्कोर किया था, बट फर्स्ट सेटअप करने में, असिस्ट करने में काफी अच्छा एक इंपैक्ट था. बट मीनवाइल सैंचो बीटिंग द फर्स्ट डिफेंडर, बट देन पास देना सही नहीं समझा, एंड डिफेंडर ने उनको बताया कि ये गलत आपने सोच रखी थी. इफ यू वुड हैव पास इट कुड हैव बीन अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट द डिफेंस they come in and they get the ball back for themselves. 60 minutes already समाप्त हो चुके. फ्रिज मैन, दिस टैकल could have meant a lot, and yes he does. एक थ्रू बॉल का जरूर प्रयास. नेमार यहाँ पे मारने once again back towards the side of Mbappe. नेमार once again with the ball. थोड़ा पीछे वियारा को जरूर यहाँ पे पास किया गया. नेमार is up again. This time it's going to be a bit difficult, but that's where the score opportunity comes in. He misses one, but he's strong and it comes in. That's a power head right there. But man, somehow Mitch misses by a mile, I'll say, to be honest, because एक कीपर का absence होना उस समय पे उस पोल फर्स्ट पोल के कंट्रोल पे, that could have just really mean some opportunity. But Navneet now once again get tackle. यहाँ पे tackle जिस तरीके से वो हो रहे ना बार बार हर बार अमान के द्वारा, that is something which he's not really able to even change. So he's able to shift his hold, adapt, his changes are not coming inside the play. He should try to really build up something new. Once again an interception coming in from the side of Navneet. A good play right there from the side of Aman once again. नीमार विद द बॉल. एम्बापे यहाँ पे जरूर अपने साइड से पास करने का प्रयास कर रहे हैं, बट एक बार फिर वो डिफेंस बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है हमें फ्रॉम द साइड ऑफ नन अदर देन नवनीत. Navneet, the way that he's playing, he is looking very comfortable right now. भले ही लीड ना हो उनके पास, भले ही वो यहाँ पर ट्रेल जरूर कर रहे हैं, बट उनके अटैक्स थोड़े से ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं. बट मीनवाइल अमान वारसी
going for that attack of his own inside the penalty area. Great pass towards Mbappe, looking for the finish, but the block comes in. Oh, not even the block. I guess अपने ही तरफ से थोड़ा सा एक गलत शॉट लिया गया, and he has been taken about. एक कॉर्नर, एक गोल की जरूर कंसीड करी थी, but once again the ball is gonna be with Navneet, and let's see किस तरीके से नवनीत जो है खेलना चाहेंगे. Short passes coming in. Ronaldo back to Charisma. Charisma trying to dribble his way past, but the players were ready for that. काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉल जो है, बॉल की पोजेशन जो है वो मेंटेन करी जाएगी ना. अब एक थ्रू बॉल निकाली गई है. Sancho on the left wing. Let's see how does he respond. काफी अच्छी पीस ऑफ स्किल उनकी तरफ से देखने को मिली है, बट मेंडेस एज अ डिफेंडर he was just too strong and बॉल को अपने फेवर में लेकर जाने में कामयाब होते हुए. एक लो पास का जरूर यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं. Well, he gets a through ball at this point of time. Mbappe with the ball That's gets it rule. inside the net, and that's another goal. Mbappe with the second goal for the night. Man, this guy, he is looking just brilliant with his control, with his aggression, and he's just doing those Mbappe things quite right. Just 15 minutes remaining, Fritz. If there is an opportunity, it's right here for the side of Navneet. वरना लीग 2 का मैच बहुत ज्यादा प्रेशर भरा रहेगा उनके लिए. Let's see, again a through ball. Again a through ball was being tried over there, but perfectly execute नहीं कर पाए. Now Navneet looking for those options, looking for those opportunities. Cancelo with the ball, but अच्छा खासा interception आएगा उन्हीं के अपने अपनी तरफ से. I mean Cancelo tackling Cancelo from two different teams. But let's see, an attack being formed. Neymar free with the ball. Neymar free with the goal, and he nets the fourth one. He nets the fourth score for himself, and what a beautiful goal. What a beautiful goal coming in from Neymar. चौथा गोल यहाँ पर स्कोर कर दिया गया है from Aman Warsi, and it's looking a bit difficult. अब ये बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालता हुआ नवनीत को, because Navneet needs to find at least a couple of goals before this game ends. नहीं तो वो मुश्किलों में पड़ सकते हैं. Vieira, a great pass towards Sancho. Sancho, another goal scoring opportunity. Neymar back towards Sancho. Sancho, great passing in. काफी अच्छा पास है Mbappe की तरफ. Mbappe almost scoring, but the keeper comes in his way and stops the ball. Now Cornet. Let's see कहाँ passes अपने लिए निकालना चाहेंगे, because they are trailing by a lot and there is not a lot of time left. 84 minutes already on the clock, and another attack coming in from Aman Warsi. Warsi को बहुत ज्यादा space दे दिया गया है Sancho के साथ, and he's making the most out of it. Mbappe free निकल गया है. Mbappe scores. Another score coming in. This is the fifth one for Mbappe, and this looks like it. 5-1. नवनीत के लिए यहाँ से वापस आ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है तरुण. बहुत ज्यादा है. इवन दो वी टॉक्ड अबाउट कि कुछ चेंजेस यहाँ पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक बहुत अच्छा पास प्ले निकाल सकते थे. व्हाई वाज दैट नॉट अ थ्रू बॉल? बट वो थ्रू बॉल पे जरूर यहाँ पे अब कैपिटलाइज किया जा रहा है. एंड कैन वी सी अ सिक्स्थ वन? बिकॉज़ मैन वी हैव ऑलरेडी सीन सम गुड प्ले. अ गुड क्रॉस बार. Oh my God, misses by a bit of those, difference right there. But man, if that could have been a goal, I believe कि ये जैसे कि आपने कहा नामुमकिन थोड़ा सा लग रहा है, वो जरूर लगने लगता. ओवर टाइम, आई मीन एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे जरूर आ चुका है फ्रेंड्स, एंड अभी के लिए द रेफरी इज रेडी विद द विसल. जस्ट वांट टू ब्लो इट ऑफ, बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट द साइड ऑफ रेफरी, yep, he goes in, he blows it off. That's a good first league match, and that's going to be none other than Arman taking a good lead right there. इतने बेहतरीन लीड के बाद आई बिलीव कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है. लेट्स टेक अ लुक एट द हाईलाइट, टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, because the way it really started off, it was looking कि Navneet did had a 2-1 scoreline at half, where it was looking quite balanced. But then Mbappe strike, I guess the first goal was only from the side of Neymar, but then Mbappe, he just ruled the entire game, and it was none other than a great victory at the first league for the side of Arman. Oh, लेग नंबर वन साइडेड निकाला है यहाँ पर अरमान वारसी ने. एंड नवनीत के लिए लेग नंबर 2 के अंदर वापसी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है. एंड आई रियली थिंक नवनीत ही नीड्स टू पुल अप हिज सॉक्स राइट नाउ. अगर यहाँ पर लेग नंबर 2 खेलते हैं, अगर यहाँ पर लेग नंबर 2 के अंदर 4 से 5 गोल वो नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा. एंड लेट्स सी हाउ डज ही गो अबाउट दैट. किस तरीके से उनकी तरफ से जो गेम है वो कंटिन्यू करा जाता है या फिर फॉरफिट करना चाहेंगे. दैट इज अनदर थिंग आई वुड लव टू सी. बट एज यू सेड तरुण, चलते हैं सीधा हाइलाइट्स की तरफ. लेट्स हैव अ लुक एट दोस ब्यूटीफुल गोल्स दैट वाज स्कोर्ड बाय बोथ ऑफ दीस. सिर्फ एक प्लेयर ने नहीं, दोनों ही प्लेयर्स ने काफी अच्छी कोशिश दिखाई है. Man, I believe the way start was being played, quite some promising start. शुरुआत में नेमार वहाँ पे अपने साइड से अपॉर्चुनिटी बनाए, स्कोर किया, एक और एक गोल यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंसीड कर लिया था एक 2-0 के बावजूद, यहाँ पे उसको पहले गोल पे तब्दील करना, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज क्वाइट ग्रेट.
जस्ट लुक आफ्टर द वे दैट एग्रेशन वाज बीइंग द प्लेड, पूरा ऑफेंसिव यहाँ पे हमें आज देखने को मिल रहे थे अमान, एंड उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था. कीपर डिड अ ग्रेट जॉब राइट दिस एट दिस राइट मोमेंट, बट फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं समाप्त होने के पहले भी वही जो खतरा था मंडरा रहा था, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द एंटायर फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग एंड में आप बात करो, पूरी तरीके से जो ऑफेंसिव था यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा था. बट देन द फर्स्ट गोल coming in from the side of Nani, this could have been the difference maker, but somehow that was just limited till the first goal itself. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिर्फ एक ही गोल तक यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सीमित रह गई, और उसके बाद तो इट वाज जस्ट अ शो कमिंग इन फ्रॉम वारसी। जिस तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किया है, ये जो फर्स्ट टचेस इतने ब्यूटीफुल जी, आए हैं, इवन ये गोल मिस जरूर हुआ, बट इफ यू लुक एट द टच, तरुण, जो पहला शॉट रिलीज किया था वो इतना ब्यूटीफुल था कि दो डिफेंडर्स को बीट किया। यहाँ पर एम्बापे, he was not the best, that was not the best possible shot coming in from him, and अभी तक गेम, just look at the time, 75 70 73 तक यहाँ पर ये गेम कॉम्पिटिटिव था। बट जैसे ही ये तीसरा गोल आया है, इसके बाद लगातार गोल्स की जो है, जिसे हम कह सकते हैं, झड़ी लगा दी अमान वारसी ने, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड अगेन। नेमार बीटिंग द प्लेयर, स्कोरिंग अनदर फोर्थ वन फॉर हिमसेल्फ, गेटिंग आई गेस द फिफ्थ वन एज वेल, पांचवा भी यहाँ पर निकालने में कामयाब हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पासेस दैट केम इन थ्रू। एम्बापे वाज विद द बॉल, स्कोर करने की ओके कोशिश थी, बट स्कोर हुआ नहीं था। But somewhere in the middle, I guess the fifth definitely came through, because again, जिस तरीके से वारसी ने खेला है, there we go, the जी. fifth one came in 5-1 the scoreline. That this is gonna be very, 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 very difficult for Navneet to come back into the action. I believe this was some interesting piece of gameplay right there coming in from the side of Oman. Yes. नवनीत जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, आई बिलीव उस हार के बाद. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे थोड़े अपडेट्स भी है फ्रॉम द साइड ऑफ नवनीत, आई बिलीव. Oh, let's see if we get that confirmation. जैसी confirmation मिलेगी, we'll definitely tell it to you guys as well. But what a game था। जिस तरीके से गेम जो है खेला गया है दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से, कोशिश भरपूर थी, एंड इवन नवनीत जिस तरीके से उन्होंने फाइट दी थी for the first 74 minutes, it was just amazing to see. It was just amazing to see. Because then again, बाद में ज़रूर हारे हैं नवनीत, बाद में काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें गेम देखने को मिला उनके ओपोनेंट की तरफ से। But the first half was a bit competitive. फर्स्ट हाफ कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव था, एंड अब मैं ज़रूर देखना चाहूँगा किस तरीके से अमान को टैकल किया जाता है। अगर अगर यहाँ पर नवनीत खेलते हैं तो उनके द्वारा, एंड इवन इफ ही प्लेज ही नीड्स टू गेट 4 गोल्स। 4 goals for himself, Tarun, is going to be a very, very big thing if he's able to get it back in his control. नहीं तो करमान टिक्का को अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अमान को किससे, बिकॉज़ बिल्कुल, ये आई 2 बिलीव. जायंट्स पे ग्रैंड फाइनल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड आई बिलीव कि ये तो चलिए कि इनका बेस्ट भी नहीं था, बिकॉज वी डिड सॉ कि यहाँ पे कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिस हुआ उधर. आपने जैसे कि मेंशन किया, अनदर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द साइड ऑफ एम्बापे विद दैट स्ट्रांग हेड, देन यस, वाज द साइड ऑफ नेमार हु मिसेस इट. गलती की, इंप्रूव इंस्टेंटली किया, एंड गोल भी कुछ इसी तरीके से मारा था उन्होंने थ्रू दोस विंग्स. लॉ पासेस क्रॉसेस बिल्कुल नहीं थे. बट गाइस, देयर इज अ बिट ऑफ एन अपडेट, अ बिट बैड न्यूज़ आई विल से, दैट द सेकंड लेग जो हम देखना चाहते थे वो यस। थोड़ा अभी मिस आउट होने वाला है ड्यू टू अ टेक्निकल इशू. We will be giving you all the updates on our Instagram handle, and in case we have any update, we'll do let you know. But till now, what we know is that Navneet, there is a small technical difficulty from his side, and what we believe is to get a fair competition right there. No matter you win, you lose, but you lose with yourself being given a chance, and you not quitters, because quitters never win and winners never quit. And that's what is the final scoreline for today, ladies and gentlemen. 5-1 is going to be the initial results, and congratulations to Aman and Karman Tika. Oh, for sure, Arman, Warsi, Karmantika. Congratulations to both of you guys, because you are the grand finals of PlayStation Presents TEC Community Cup. And oh man, this grand finals is gonna be amazing, Tarun. ये grand final देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. But I would love to say kudos, a good job from side of Aditya Dubey and Navneet as well, जिन्होंने टॉप 4 के अंदर आके बहुत एक कह सकते हैं टॉप 4 के अंदर आना इज अ ग्रेट थिंग, एटलीस्ट अ Yep. पोडियम फिनिश फॉर ऑल ऑफ दीस 4 प्लेयर्स टिल फोर्थ। एंड नवनीत एंड आदित्य वो प्राइस पूल के एक चंक के लिए लड़ेंगे जरूर, आई गेस एक थर्ड पोजीशन के लिए, या फिर डिसाइड होगा इन द गोल डिफरेंस, ये मैं देखना जरूर चाहूंगा। बट एनीवे, एक अच्छा गेम, एक काफी बेहतरीन गेम दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से, एंड करमान एंड अमान आर द विनर्स ऑफ द डे। Man, congratulations to both of these players. And well, this was some amazing day right here at the PlayStation.
presenting the TEC Community Cup, one of those amazing platforms for all the FIFA players out there to get an amazing, chance to display their caliber, their true potential. Yes. And with that, we will be tuning off the stream for now as well, because we have all the matches being lined up for tomorrow. The grand finale day is going to be tomorrow. I'm really excited to see what is going to be the eventual result when our national representative Karmantika is going to Yes. go up against the Sara Vaman Varsi. And well, I believe, Fritz, you already know there might be some predictions coming out of you. But before we end, what do you got to say about the entire day today? Oh, for sure. The day was great. The day was great. हमें काफ़ी अच्छे फुटबॉल मैचेस देखने को मिले. मोर इम्पोर्टेंटली इज़ व्हाट आई फेल्ट लाइक. फर्स्ट गेम जो कमबैक आया है, ये मैं पूरे टूर्नामेंट में देखना चाह रहा था. शायद इससे पहले एक ही बार हुआ था. बट उसके बाद सेकंड गेम के अंदर वो जो वापसी करी गई है कर्मांटिका की तरफ से. That was just flawless. This is the second time we saw a great comeback coming in, and I definitely enjoyed it. Second game, 74th मिनट कॉम्पिटिटिव था, बट उसके बाद जो एक वन साइडेडली ट्रेन पकड़ी है, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी देखने के लिए. जिस तरीके से लगातार गोल्स पे गोल्स, गोल्स पे गोल्स, गोल्स पे गोल्स यहाँ पर वारसी ने स्कोर किया है. दैट वाज़ समथिंग वी डोंट सी डेली. जिस True. तरीके से उन्होंने लगातार स्कोर्स निकाले, 5-1 तो मुझे कम लग रहा है, 7 हो सकते थे. 2 ऐसे स्कोरिंग बिल्कुल. अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ पर कीपर को आपने पूरी तरीके से आगे बुला लिया था, कीपर को बीट कर दिया था. इट वाज़ जस्ट अबाउट कीपिंग द शॉट ऑन टारगेट, जिस पे वो कामयाब नहीं रहे. तो वो कहीं न कहीं मैं कहूँगा जहाँ पर एक 7-1 हो सकता था, एक 5-1 का स्कोर लाइन हमें देखने को मिला. बट ओवरऑल द डे वाज़ ग्रेट, एंड एज़ तरुण सेड, दैट वाज़ इट फॉर टुडे गाइस. होपफुली आप Yep. सभी लोगों को मज़ा आया हो, एंड इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ कल भी हम लोग यहाँ पर वापस आने वाले हैं सेम टाइम पे विद द ग्रैंड फाइनल्स. तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा.